आज 14 February 2025, that is Valentine's Day, the day of love. And here we are talking about the love between the two nations, Vietnam and India. And that is by exploring the cultural heritage of India and Vietnam. The most important thing is both the countries share the similar past. Thousands of years back, if you go back about 1000 years, you will see many culture of India is same as of in Vietnam. So here I introduce our guest on the stage. Here the publisher of the book Guardian of Heritage, Narendra Paul Verma ji, the Diamond Pocket Book publisher and chairman. And beside him, I have with me the chief guest for today's book release. That is Shri Raj Bhushan Chaudhary ji, Union Minister for Water, and the man of the day, Professor Dr. Chu Walkway, and he is the one whose biography you find in this book. And beside me, my Vietnam partner, Julia, the Secretary General for World Record Union, and here Utana, Asia Book of Records, resident citizen of Germany, but resident of Singapore, and she has reviewed this book. So for any book review, she can narrate a little bit, about 2 minutes, what you found in the book to the media. I was very, very impressed how someone can struggle so much, but find very early in age actually the meaning of his life very early. And he had to struggle, and he had to go against boundaries. He had to fight for what he's loving so much that he still continue till today and bring the inheritance not only to Vietnam's population back, but even to other countries. Yeah, and I'm very happy that I am part of this, and I think we all would about where we can, where we find our inheritance, what does our parents give us, what we can bring to our children and into the future. डायमंड पॉकेट बुक्स 1948 से लगातार हर किस्म का साहित्य छापते रहते हैं, विशेष रूप से साहित्य और संस्कृति के बारे में। और इन दिनों हमने और विषय भी लिए हैं जिसमें स्वास्थ्य को भी इंक्लूड किया गया है, और स्वस्थ भारत बनाने की ओर जो कदम है उसको हम भी सार्थकता प्रदान करते हैं। लगभग हर साल लगभग हम 500 किताबें छापते हैं, एवरी डे 1 बुक, और हिंदी में, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, पंजाबी and Urdu. We are publishing in all the major languages, all the books, and we have reached all over India and all over the world. So, Vishwaroop Rai Chaudhary is writing books which are for the welfare of the society, and all these books are with the aim that India should become an healthy nation. And he is doing all these partnerships with Vietnam and India, which is a respectable thing. We wish him every success. Thank you. आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पर इंडो वियतनाम कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में आज गार्जियन ऑफ हेरिटेज नामक जो बुक है, जो बायोग्राफी है प्रोफेसर डॉक्टर चाओ बाओ क्यू जी का, वो हमारे बीच हैं, यहाँ उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इस बुक के जो राइटर हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर विपिन कुमार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विश्व हिंदू परिषद के, और यहाँ उपस्थित हैं श्री नरेंद्र वर्मा जी जो डायमंड बुक पब्लिकेशन के चेयरमैन हैं, और हमारे जर्मनी से जो बुक का रिव्यू उनकी है मैडम आई हुई हैं, और
सम्मानित सभी जो दोनों देश के जो प्रतिनिधिगण हैं वो सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये एक प्रयास है कि जो हमारे साझा विरासत रहा है, सांस्कृतिक विरासत रहा है इंडिया और वियतनाम का, उसको एक एक्सचेंज करने का, उसको पुनः जागरण करने का, उनको फिर एक दूसरे को जताने का कि हम एक हैं और हमारे बीच में कितनी गहरा संबंध रहा है, ये दर्शाने का एक प्रयास है। और इसी कड़ी में ये 20वां एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है। अलग अलग समय में ये कार्यक्रम लगातार किया जाता है ताकि जो साझा विरासत है उसको हम लोग कायम रख सकें और उसको मजबूत कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। एंड फाइनली अगले 2 मिनट के लिए प्रोफेसर डॉक्टर Chu Bo will speak to the Indian media. Tôi rất hân hạnh năm nay là bản cá nhân tôi từ Việt Nam sang, đoàn Việt Nam sang 20 người. Tôi rất vinh dự được Dr. B đã ra đợt cuốn sách và một đại sứ văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tôi cảm ơn tất cả báo chí luôn luôn có sự tin yêu, có sự tin tưởng và mang cho thân mình tôi một trái tim, một phát tôi cảm tạ tất cả.